Hello guys, good afternoon. I welcome you all on Unacademy, India's largest learning platform. So, first of all, share कर देते हैं class, फिर start करते हैं. So basically, we are studying about the physiology. Myself, Dr. Nidhi, I am educator of Unacademy. I am teaching you all physiology. And अगर examination point of view से बात करें तो काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है हमारा physiology subject. On an average, 15 to 17 question come in our examination, यानी scoring subject. So everybody clear the concept so that you can score more in your examination and you will be able to achieve your target with good rank. This is our page on Telegram, that is Let's Crack NEET PG. फॉलो कर लीजिए. फॉलो करने का बेनिफिट ये होगा कि आपको क्लासेस के यहाँ लिंक मिल जाते हैं. दिस काफ़ी सारे पेड कोर्स नहीं है, काफ़ी सारे स्पेशल क्लासेस नहीं है. सो एनी टाइम यू कैन ज्वाइन एंड रिवाइज द टॉपिक. दिस इज माई अनअकैडमी पेज unacademy.com/KGMC. फॉलो कर लीजिए. फॉलो करने से क्या होगा, जब भी मेरी कोई क्लास होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. इधर इट इज़ अ पेड क्लास और स्पेशल क्लास. दिस इज द रिकॉर्ड Dr. Nidhi. If you want to join any paid course, you can use this referral code to get additional 10% off. Important announcement, we are going to have a all India mock test on 26 Feb 9 AM. अगर इस साल आप अपना एग्जामिनेशन दे रहे हो NEET PG 2022 तो do give this all India mock test. From that you can analyze your preparation. From that you will be friendly to the exam environment. From that also you will be seeing how you are going to divide the hours so that you can cover each and every question. For that you have to enroll yourself. For enrollment, do use the code that is Dr. After using the code, this mock test will be open at 27th Feb 9 AM. Amazing offer is going there. When you take 3 months subscription, 1 month subscription will be added as a free, of course. We are having 2 type of subscription, plus subscription and iconic subscription. First, coming to the benefit of plus subscription, when you take plus subscription, you are able to access both live and recorded session. If by any chance you miss the session, you can see the recorded version. You have an opportunity to learn from India's top educator for the medical examination. We always conduct this live test and live quizzes. From that you can analyze your preparation at any point of time. You have a flexibility, you can study on the device of your choice. We have a question bank which consists of 25,000 plus high yield question, a clinical based question and with explanation. So this is going to be very beneficial for all of you. Now coming to the iconic subscription, where you get access of India's 2 best platform, that is Unacademy and PrepLadder. So you are going to get all the benefit of plus. Like I said, live classes, recorded classes, question bank, live tests, live quizzes and the PDF. Along with that, you get access for the PrepLadder. In this, you can access the clinical and integrated essential of PrepLadder, video lecture from Dream Team, Question Bank 3.0, rapid revision and snapshot, and you will also be provided with their treasure and dream notes. So if you want to access the PrepLadder also, go for the iconic subscription, everybody. They are our FMG December 2021 toppers. ये कुछ शेड्यूल है, अपकमिंग शेड्यूल्स है. On today, आज है हमारा स्टडी विद टेस्ट विद डॉक्टर आनंद भाटिया. ऑन टाइमिंग है इसकी 10 PM. तो डू गिव दिस टेस्ट. ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे. काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सर ने बनाए हैं, तो ज़रूर दीजिएगा अपना टेस्ट. फिर अपकमिंग शेड्यूल आफ्टर द 11th इज 13 Feb और ये 14 Feb और 15 Feb का. तो इनका भी डेट और टाइमिंग आप याद कर लो. अगर आपको टेस्ट देना है तो यू कैन गिव दिस टेस्ट. ठीक है, चल. Coming to the special class feature, our special class is also like a YouTube session free of cost, but they are way more special because the special class is always and always live. Live classes का benefit ये होता है, आप अपने एजुकेटर से interact कर सकते हो, अपने डाउट को लाइव सेशन में क्लियर कर सकते हो. पोल्स के फीचर होते हैं. फ्रॉम दैट द क्लास इज वेरी एंगेजिंग. रेज द हैंड फीचर्स देयर. नाउ यू कैन टॉक टू एजुकेटर इन द लाइव सेशन. अगर किसी एजुकेटर को फॉलो करते हो तो उनके क्लास से प्रायर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है. After the lecture, you can download it and revise it anytime, anywhere. All India revision batch start हो चुका है. 3 months की ड्यूरेशन होगी. ठीक है, 11th Feb को स्टार्ट होगा, 10th May तक है ये. इसमें 8 ग्रैंड टेस्ट होंगे. ठीक है,
140 आवर्स ऑफ रिवीजन होंगे, जिसमें 4 आवर पर डे क्लासेस होंगी. ऑल 19 सब्जेक्ट विल बी कवर्ड. ठीक है, रिवीजन क्लास होगा, सेल्फ स्टडी आप करोगे, ग्रैंड टेस्ट दोगे, फिर सॉल्यूशन डिस्कशन होगा. तो एक स्टेप बाय स्टेप आपकी रिवीजन होगी. तो अगर आपका रिवीजन का टारगेट है तो डू एनरोल योर सेल्फ एवरीबडी. फोकस FMG दिसंबर 2022 बैच भी स्टार्ट हो चुका है. टारगेट नेक्स्ट 2022 सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन बैच भी स्टार्ट हो चुका है. चलो अपने टॉपिक पे आते हैं. दैट इज मसल फिजियोलॉजी. कमिंग टू द फर्स्ट, दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ skeletal muscle. First, coming to the structural component of skeletal muscle, the skeletal muscles consist of a cell membrane which is known as sarcolemma. It consists of connective tissue layer which consists of 3 layer: epimysium, perimysium and endomysium. Epimysium is outermost covering. See, this is the epimysium that is covering the whole muscle fascicle. ठीक है, सिंगल अगर मसल फाइबर की बात करेंगे तो सी दिस इज अ सिंगल मसल फाइबर. ठीक है, इसको कौन कवर कर रहा है? इसको कवर कर रहा है हमारा एंडोमाइसियम. ईच fascicle is covered by perimysium and the whole muscle unit is covered by epimysium. So these are basic 3 connective tissue layer. Generally muscle fiber combine and form fascicle, and fascicle join to form the muscle. See, this is the fascicle, this is the muscle fiber, this is the fascicle, and this is the whole muscle unit. ठीक है, the whole muscle unit is covered by epimysium. Is this clear? And the functional unit of muscle is sarcomere. Now coming to the sarcomere, the most important part, that is all the structure that comes between the 2 Z line is the sarcomere. ठीक है, it consists of certain bands, certain lines. So this is the thin filament, that is actin filament. This is the thick filament, that is myosin filament. Thick filament and thin filament. So the sarcomere consists of certain bands and certain lines. It excuse me, it consists of A band, I band and H band, and it consists of Z line and M line. ठीक है, तो अब आते हैं फर्स्ट A band. A band is the dark band and this is made up of myosin and it is present in the center of sarcomere. So this is our A band. ठीक है, next band is I band. This is the I band. It consists of thin filament, that is actin filament. Next band, that is H band. It is the portion of A band which is not overlapped by actin. So this is the H band. This is the portion of A band which is not overlapped by actin is our H band. Is this clear with everybody? So we have lines M line and Z line. M line denote the middle part of myosin and Z line क्या होता है? उससे actin anchored होता है. So see, this is the diagram. This is our Z line जहाँ पे actin filament anchored है. So this is about M line and Z line. M line is present in the center. So see, this is the diagram. This is the A band which consists of dark band myosin filament. ठीक है, this is the H band, the portion of A band which is not overlapped by actin filament. ठीक है, और ये हो गया हमारा Z line. Clear? And this is the M line that denote middle part of our sarcomere. ठीक, is this clear? तो इसमें कुछ anchoring proteins होते हैं like alpha actin. This is alpha actin that connects Z line to the actin filament. So do remember this alpha actin is important. It is an anchoring protein which anchor the actin filament to the Z line. ठीक, और M line में भी कुछ proteins होते हैं like myosin, M protein, obscurin. ठीक, clear? And there is another, this one, titin. It is also important. It is a spring-like protein which arises from Z line and it reaches to the M line. Is this clear? So it arises from Z line and it reaches to M line. So this is the titin. So we have alpha actinin, we have titin. Clear? So the anchoring protein are titin, alpha actinin and myosin.
Already studied, it is the spring-like protein that arises from Z line and it reaches to M line. Alpha actin, it connects I band to Z line. It connects thin filament to Z line. Myomycin, it connects myosin to the M line. अब आ जाते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा इस बैंड्स एंड जोन्स में. सी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, सी फर्स्ट वन इज द रिलैक्स वन. यहाँ पे ये हमारा हो गया ए बैंड जो कि हमारा थिक बैंड है. ये हो गया हमारा एच जोन, ए पार्ट ऑफ ए बैंड विच इज नॉट ओवरलैप बाय एक्टिन, एंड दिस इज द थिन बैंड आई बैंड. ठीक है, तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ, हमारा ए बैंड रिमेन सेम. सी द ए बैंड विल रिमेन सेम. एच बैंड क्या हुआ, एच बैंड हमारा shorten up हो गया, I bands shorten ups. So do remember, during contraction, A bands remain unchanged while H band and I band shorten ups. Is this clear? चलो अब आ जाते हैं साइटोस्केलेटल प्रोटीन इन मायोफिब्रिल. कौन कौन से इसको समराइज कर लेंगे. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में आ जाएगा हमारा एक्टिन एंड मायोसिन. दे आर माइक्रोफिलामेंट. पढ़ा होगा आपने साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स 3 तरह के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट एंड माइक्रोफिलामेंट. दिस एक्टिन एंड मायोसिन आर माइक्रोफिलामेंट. ठीक है, अब आ जाते हैं रेगुलेटिंग प्रोटीन. रेगुलेटिंग प्रोटीन में मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन. फर्स्ट कमिंग टू द ट्रोपोमायोसिन. ट्रोपोमायोसिन रेस्टिंग कंडीशन में क्या करता है, ट्रोपोमायोसिन कवर करता है मायोसिन बाइंडिंग साइट विच इज प्रेजेंट ऑन एक्टिन. सो एक्टिन पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो कवर्ड हो जाता है ट्रोपोमायोसिन से एट द रेस्टिंग कंडीशन. सो देयर इज नो एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन एट द रेस्टिंग कंडीशन. बट व्हाट हैपन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम विल बाइंड टू द ट्रोपोनिन सी. ठीक है, एंड ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स विल मूव अवे फ्रॉम द मायोसिन बाइंडिंग साइट. तो मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी, एंड दैट इज गोइंग टू कॉज एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन. सो दिस इज द बेसिक रोल ऑफ ट्रोपोमायोसिन. डू रिमेंबर द ट्रोपोमायोसिन इज कवरिंग द मायोसिन बाइंडिंग साइट, not troponin. It is covered by tropomyosin. Do remember everyone, this is important. See from the diagram, this filament is the actin filament, this filament is the myosin filament. ठीक है, and this actin filament consists of myosin binding site, and at the resting condition what happened, this myosin binding site is covered by this is our tropomyosin. ठीक है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, कैल्शियम एंटर करेगा, इट विल बाइंड टू द ट्रोपोनिन सी. ठीक है, तो क्या होगा, कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से बाइंड होगा, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स विल मूव अवे फ्रॉम द मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट विल बी एक्सपोज एंड दैट इज गोइंग टू कॉज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. इज दिस क्लियर विथ एवरीबॉडी. अभी तक सेशन में किसी को कोई डाउट, एनीवन? किसी को सेशन में अभी तक कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं. एंड डू रिप्लाई फास्ट एवरीबॉडी. चलो फर्दर प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट इज द ट्रोपोनिन. दिस ट्रोपोनिन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन सी. ट्रोपोनिन टी से ट्रोपोमायोसिन बाइंड करता है. Troponin I is inhibition of myosin and actin, and troponin C has 4 calcium binding site. ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज सपोर्टिंग प्रोटीन्स. डायग्राम्स में हमने देखा था टाइटिन, डेस्मिन, डेस्मोट्रोपिन, दे आर द सपोर्टिंग प्रोटीन. टाइटिन इज द स्प्रिंग लाइक प्रोटीन. डेस्मिन is used as a tumor marker for sarcoma. Mutation of this dystrophin causes muscular dystrophy. And the last protein, that is relaxation protein, which is also known as sarcopump, that is sarcoplasmic reticulum calcium adipase pump. So what happened during relaxation, the ECF calcium should decrease. सार्कोलेमा में जो कैल्शियम है, हमारे मसल सेल में जो कैल्शियम है, दैट शुड डिक्रीज फॉर द रिलैक्सेशन, एंड दैट डिक्रीज इन कैल्शियम इज डन बाय द सरका पंप. द सरका पंप pushes the calcium back into the sarcoplasmic reticulum and calcium level will decrease, and that causes muscular relaxation. So this is the most important relaxation protein present in our muscle. ठीक है, now coming to the most important part, how the excitation and contraction couples. So RMP, what is the RMP of alpha motor neuron? It is minus 70 millivolt. Whenever it is excited, our alpha motor neuron is excited, it is going to cause depolarization.
and depolarization is due to sodium influx via voltage gated sodium channel. So what happened? Due to depolarization, membranal potential will increase, and when it falls to minus 40 millivolt, the voltage sensitive calcium channel will open up, and that is going to cause calcium influx in the neuron, and this calcium is going to bind with the neurotransmitter vesicle, that is the acetylcholine vesicle. So acetylcholine will be released at the NMJ. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स के साइनाप्स में जो न्यूरो ट्रांसमीटर स्टोर्ड होता है वेसिकल के फॉर्म में, एंड दैट वेसिकल इज नोन एज क्वांटस. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एस्पेक्ट. टेट्राडॉक्सटॉक्सिन वो क्या है? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ब्लॉकर है. परफॉर्मेंस में होता है टेट्राडॉक्सटॉक्सिन, इट इज अ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ब्लॉकर. नेक्स्ट इज द लैम्बर्ट-इटन माइस्थीनिया सिंड्रोम. इसमें क्या होता है? ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल स्टार्ट फॉर्मिंग. So these are basic important clinical aspects. Do you remember that tetrodotoxin is voltage gated sodium channel blocker? Lambert-Eaton myasthenia syndrome में क्या होता है? Auto antibodies against this voltage sensitive calcium channel. तो voltage sensitive calcium channel के against हमारा auto antibody बन गया. Neurotransmitter release नहीं होगा, excitation, contraction, coupling नहीं होगा. It lead to the Lambert-Eaton myasthenic syndrome. Is this clear with everybody? अब आगे आते हैं. This acetylcholine is going to bind with the nicotinic acetylcholine receptor that is present in a skeletal muscle. ठीक है, ये बाइंड करेगा तो क्या होगा? सोडियम इनफ्लक्स इनटू द मसल विल स्टार्ट, एंड दैट इज गोइंग टू जनरेट दिस एंड प्लेट पोटेंशियल एंड लोकल पोटेंशियल. डू यू रिमेंबर दिस वन? द पोटेंशियल दैट इज जनरेटेड इन द मसल इज एंड प्लेट पोटेंशियल और द लोकल पोटेंशियल. ठीक है, दिस एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट अलोंग द सार्कोलेमा टू द टी ट्यूब्यूल. अब बिल्कुल ध्यान से देखना, दिस टी ट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ अ रिसेप्टर दैट इज नोन एज dihydropyridine receptor. So that due to the action potential reaching to the T tubule, there occur a conformational changes into this receptor, and that is going to open the ryanodine receptor which is present in sarcoplasmic reticulum. From the sarcoplasmic reticulum, calcium will be released from the terminal cistern. ठीक है, एल ट्यूब्यूल के टर्मिनल सिस्टर्न से क्या हुआ? कैल्शियम रिलीज होगा. दिस कैल्शियम इज गोइंग टू बाइंड विद द ट्रोपोनिन सी, एंड क्या होगा? ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स विल मूव अवे, एंड दैट इज गोइंग टू एक्सपोज द मायोसिन बाइंडिंग साइट दैट प्रेजेंट इन एक्टिन. So myosin binding site will be exposed, and that is going to cause trigger of actin myosin interaction that causes cross bridge formation. There will be power stroke, there will be sliding, and for relaxation the calcium is pushed back into the sarcoplasmic reticulum by the Sarka pump, and that is going to cause relaxation of muscle. So this is how our excitation and contraction couples. Everybody, is this clear? Do reply first, everyone. Is this clear? रिवाइज करिए फिर से. देखो क्या हुआ? आरएमपी ऑफ अल्फा मोटर न्यूरॉन कितना था? -70 मिलीवोल्ट. ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन क्या हुआ? सोडियम इनफ्लक्स हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया. डीपोलराइजेशन की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगेन रीचेस टू -40 मिलीवोल्ट. -40 मिलीवोल्ट पे क्या हुआ? कैल्शियम इनफ्लक्स हुआ, एंड दैट इज गोइंग टू कॉज रिलीज ऑफ दिस acetylcholine. This acetylcholine is going to bind with the nicotinic acetylcholine receptor that is present in our skeletal muscle. So that is going to cause sodium influx into the muscle. So end plate potential or local potential is generated in our muscle, and that is going to transmit from the sarcolemma to the T tubule. Let me draw this one now so that it will be more clear for all of you. See, this is our sarcolemma, this is the T tubule.
This is our sarcoplasmic reticulum. This is sarcolemma. सार्कोलेमा में कैल्शियम सोडियम इन्फ्लक्स हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, एंड प्लेट पोटेंशियल अराइज हुई. दिस एंड प्लेट पोटेंशियल reaches through the T-tubule formed by the sarcolemma. ठीक है, यहाँ पे आया, इसने क्या किया, डायहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर चैनल में कन्फर्मेशनल चेंज करता है, एंड दैट इज गोइंग टू ओपन अप दिस राइनोडीन रिसेप्टर. दिस इज द राइनोडीन रिसेप्टर प्रेजेंट इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टर्मिनल सिस्टर्न ऑफ एल ट्यूब्यूल. ठीक है, उस पर प्रेजेंट है हमारा राइनोडीन रिसेप्टर. कन्फर्मेशनल चेंजेस ऑफ दिस डायहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर is going to open the rhinodine receptor. Due to opening of rhinodine receptor, there will be calcium efflux from the sarcoplasmic reticulum. This calcium is going to bind with the troponin C. Troponin myosin complex will move away from the myosin binding site. So that is going to expose the myosin binding site. So since myosin binding site is exposed, there will be cross bridge formation, there will be pars rogue, there will be sliding of muscle, and that is going to cause muscular contraction. For relaxation, calcium is sent back into the sarcoplasmic reticulum via the Sarca pump. So calcium decrease हो जाएगा. Again troponin tropomyosin complex will cover that myosin binding site. Is this clear, Dr. Satvik? Is this clear now? Do reply fast, everybody. Is this clear? चलो फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं. ओके, वी हैव दिस डायग्राम ऑल्सो. रिवाइज कर लीजिए. क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लोकल पोटेंशियल जनरेट हुई, दैट रीचेस टी ट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ दिस डायहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर. सो कन्फर्मेशनल चेंजेस occur in this डायहाइड्रोपायरिडीन receptor. That is going to open up this rhinodine receptor, which is present in our, this is the terminal cistern of sarcoplasmic reticulum, terminal cistern of L tubule. So that is going to cause opening of this rhinodine receptor. That is going to cause more calcium in efflux. Calcium is going to bind to the troponin C. ठीक है, for relaxation we have Sarca pump. This Sarca pump causes, again pushes back the calcium back to the sarcoplasmic reticulum. Calcium will decrease and that is going to cause muscular relaxation. ठीक है, क्लियर हुआ एवरीवन? इज दिस क्लियर? चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. व्हाट डज दिस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्टेट्स? इन स्टेप 1 एटीपी बाइंडिंग अकर्स. ठीक है, मायोसिन हेड कितने डिग्री पे होता है? दैट इज एट 45 डिग्री. व्हेन एटीपी बाइंड टू द हेड, एटीपीज एक्टिविटी इज स्टार्टेड. एटीपीज एक्टिविटी होगा तो क्या होगा? एटीपी विल बी कन्वर्टेड इनटू एडीपी एंड फॉस्फेट. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? एटीपी हाइड्रोलाइसिस रेस्टिंग स्टेज ऑफ मसल्स में होता है. ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस हुआ, उसकी वजह से मायोसिन हेड फ्रॉम 45 इट टर्न्स टू द 90 डिग्री. क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जैसे ही 90 डिग्री पे आएगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा अगर कैल्शियम का प्रेजेंस हुआ तो. इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्या होगा? एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन होगा, क्योंकि कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से बाइंड कर जाएगा, मायोसिन बाइंडिंग से एक्सपोज होगा, तभी 90 पे आने पे हमारा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा. सो इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन विल आकर. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? फॉस्फेट रिलीज होता है. अब क्या हुआ? क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गया और फॉस्फेट रिलीज हो गया. जैसे ही फॉस्फेट रिलीज होगा, अगेन मायोसिन हेड विल बी टर्न फ्रॉम 90 टू 45. सो देयर विल बी पुलिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट एंड दैट कॉजेज दिस स्लाइडिंग मूवमेंट. यू कैन सी आउट हियर. ठीक है, ये 90 डिग्री पे हमारा मायोसिन हेड है. अब हमारा 90 से अगेन 45 डिग्री पे आएगा, तो ये हमारा पुल करेगा एक्टिन फिलामेंट को एंड दैट इज गोइंग टू कॉज स्लाइडिंग मूवमेंट. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? लास्ट स्टेप में क्या होगा? एडीपी रिलीज होगा. और जब एडीपी फ्री मायोसिन हेड होता है तो क्या होता है? वो हमेशा बाउंड होता है एक्टिन से until next ATP molecule is binded with the myosin. Is this clear with everybody? तो that's why ये जो स्टेप है कि ADP फ्री मायोसिन क्या होगा? हमेशा स्टक्ड होगा.
एक्टिन फिलामेंट से स्टक होगा, मायोसिन फ्री हेड जो भी होगा वो स्टक होगा, तो ये इसी की वजह से रिगर मॉर्टिस आती है. सो आफ्टर द डेथ व्हाट हैपन, देयर इज नो लैक ऑफ एटीपी, and due to the lack of ATP, myosin head remain stuck to the actin filament, and that lead to the stiffening of muscle after the death. That is known as rigor mortis. Is this clear with everybody? See from the diagram. Initially the ATP head is at 45 degree. ठीक है, ATP से जैसे ही बाइंड किया ADP हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, ADP एंड फॉस्फेट विल बी फॉर्म एंड मायोसिन हेड कहाँ टर्न कर जाएगा, 90 डिग्री पे टर्न कर जाएगा. एंड जैसे ही 90 पे आएगा, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम इट इज गोइंग टू कॉज क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉस्फेट विल बी रिलीज, एंड व्हेन फॉस्फेट इज रिलीज अगेन द मायोसिन हेड फ्रॉम 90 टर्न्स टू 45 डिग्री. सो 45 डिग्री पे जैसे ही टर्न किया तो क्या हुआ, हमारा स्लाइडिंग अकर्स. सो फ्रॉम दैट स्लाइडिंग अकर्स, लास्ट स्टेप में क्या होगा, एडीपी विल बी रिलीज, एंड एडीपी फ्री जो मायोसिन हेड होगा वो हमेशा स्टक होगा एक्टिन से, एंड दैट इज द रीजन ऑफ द रिगर मॉर्टिस. इज दिस क्लियर विथ एवरीबडी? See, now coming to the rigor mortis, what happened? Due to the lack of ATP, myosin head remain stuck to the actin filament, and that is causing the stiffening of muscle after the death. Is this clear with everyone? Proceed करें further. चलो अब आ जाते हैं स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में. तो उसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अबाउट द लेंथ टेंशन रिलेशन. तो फॉर मैक्सिमम टेंशन दो क्राइटेरिया होना चाहिए, एक्टिन मायोसिन ओवरलैप ऑप्टिमल होना चाहिए, एंड देयर शुड बी रूम टू स्लाइड. ठीक है, ओवरलैप भी होना चाहिए, रूम टू स्लाइड भी होना चाहिए. तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर मैक्सिमम टेंशन there should be actin myosin overlap optimal, and there should be room to slide. ठीक है, तो इसमें जो कर्व हम ड्रॉ करते हैं वो somewhat like this होता है. Point A, B, C and D. तो पॉइंट ए पे क्या होता है, सार्कोमियर की लेंथ होती है 1.6265 माइक्रोमीटर. ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्टिन मायोसिन ओवरलैप तो ऑप्टिमल है, बट देयर इज नो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन. देयर इज क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, number of cross bridge formation out here is more, but the room to slide is lacking. ठीक है, रूम टू स्लाइड नहीं है, तो अभी हमने बात की थी देयर शुड बी ओवरलैप, देयर शुड बी रूम टू स्लाइड, सो दैट्स व्हाई टेंशन आउट हियर विल बी लीस्ट. ठीक है, लेस होगा यहाँ पे पॉइंट ए पे. अब आ जाते हैं पॉइंट बी एंड सी. वहां पे सार्कोमियर की लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इट इंक्रीजेस टू 2 माइक्रोमीटर. तो क्या होगा, एक्टिन मायोसिन ओवरलैप ऑप्टिमल होगा. ठीक है, बट out here there is room to slide, plus there is room to slide. so यहाँ पे क्या होगा, टेंशन जो डेवलप होगा वो मैक्सिमम होगा. ठीक है, पॉइंट डी पे क्या है, there is no actin myosin overlap. एक्टिन मायोसिन ओवरलैप ही नहीं है, तो टेंशन क्या हो जाएगा, लोएस्ट हो जाएगा. ठीक है, सी दिस इज द कर्व एट पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी. तो पॉइंट ए पे क्या है, हम देख रहे हैं एक्टिन मायोसिन ओवरलैप तो काफ़ी अच्छा है, बट देयर इज नो रूम टू स्लाइड आउट है. जबकि बी एंड सी पॉइंट पे क्या है, सार्कोमेयर की लेंथ इंक्रीज हो गई, तो ओवरलैप भी है प्लस रूम टू स्लाइड है, तो यहाँ पे जो टेंशन डेवलप है दैट इज मैक्सिमम. नेक्स्ट द पॉइंट डी. पॉइंट डी पे क्या है, सार्कोमेयर की लेंथ क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, एक्टिन मायोसिन डू नॉट ओवरलैप मच, सो वेरी लिटिल टेंशन इज डेवलप्ड आउट हियर. So this is about length tension relationship of a sarcomere. तो इसमें दो टर्म आती है, that is optimal length or resting length, and next one is the equilibrium length. Length of a muscle at which tension is maximum is the optimal length. तो अभी बात किया था पॉइंट बी एंड सी पे हमारा
टेंशन मैक्सिमम था एंड वहां पे सार्कोमेयर की लेंथ कितनी थी 2 माइक्रोमीटर. सो दिस 2 माइक्रोमीटर इज द ऑप्टिमल लेंथ और रेस्टिंग लेंथ. नेक्स्ट इज द इक्विलिब्रियम लेंथ. जब हम मसल को उसकी बोनी अटैचमेंट से डिटैच कर देंगे तो जो एक्चुअल मसल का लेंथ आएगा दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम लेंथ. Length of relaxed muscle cut from the bony attachment is known as equilibrium length. Is this clear with everybody? So tension कौन कौन से डेवलप होते हैं हमारे मसल में? एक्टिव टेंशन एंड पैसिव टेंशन. एक्टिव टेंशन किस वजह से? एक्टिन मायोसिन इंटरैक्शन की वजह से, जो अभी हमने बात की थी. नाउ कमिंग टू द पैसिव टेंशन. हमारा जब एक्टिन मायोसिन इंटरैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो टाइटिन प्रोटीन स्ट्रेच्ड होता है. दैट इज गोइंग टू कॉज दिस पैसिव टेंशन. सो हम डिराइव कर सकते हैं टोटल टेंशन को, दैट इज समेशन ऑफ एक्टिव टेंशन प्लस पैसिव टेंशन. दिस इज क्लियर विद एवरीबडी. So active tension is due to actin myosin interaction. Passive tension is due to elastic protein when stretched, like titin is stretching. This is the passive tension. Is this clear with everybody? चलो अब आ जाते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें मसल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है. फर्स्ट फ्रॉम द एटीपी स्टोरेज, इमीडिएट सोर्स है. अप टू 3 सेकेंड हमारा जो मसल को एनर्जी मिलती है दैट इज फ्रॉम द इमीडिएट सोर्स. दैट इज जो हमारा एटीपी हमारी बॉडी में स्टोर्ड है वहां से एटीपी रिलीज हो जाता है. नेक्स्ट जो 8 to 10 सेकेंड के लिए जो एनर्जी मिलती है दैट इज फ्रॉम द क्रेटिनिन फॉस्फेट एंड दैट सस्टेन द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन फॉर 8 to 10 सेकेंड. Next, the energy will be provided from the glycolysis. Next, the ATP will be released from the aerobic metabolism. ठीक है, so this is about energy for the muscular contraction. अब आ जाते हैं different type of muscle fibers आते हैं. ठीक है, it can be either small or large fiber. Small fibers are always and always red in color, so they are small and red. Large fiber can be either red or white, so it can be either large red or it can be large white. ठीक है, तो टाइप 1 हो जाएगा. स्मॉल रेड को हम टाइप 1 कहते हैं, लार्ज को हम टाइप 2 फाइबर कहते हैं, लार्ज रेड को हम टाइप 2A फाइबर कहते हैं एंड लार्ज व्हाइट को टाइप 2B फाइबर कहते हैं. ठीक, अब इसको हम डिटेल में देखेंगे. रेड मीन्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन, व्हाइट मीन्स मायोग्लोबिन इज एब्सेंट. स्मॉल फाइबर तो कैसा होगा? स्लो फाइबर. सो ये स्लो फाइबर हो गया. लार्ज फाइबर यानी फास्ट फाइबर. कंडक्शन क्या होगा? लार्जर फाइबर में फास्ट होगा, सो दे आर नोन एज फास्ट फाइबर. स्मॉल फाइबर में कंडक्शन कैसा होगा? स्लो होगा, सो दे आर नोन एज स्लो फाइबर. ठीक, अब देखना, रेड है मीन्स मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट. मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट मीन्स ऑक्सीजन इज देयर. सो यहाँ पे किस टाइप का पाथवे होगा? ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, ऑक्सीडेटिव पाथवे होगा. ठीक है, एनर्जी जो रिलीज होगी वो ऑक्सीडेटिव पाथवे से होगी. ठीक, रेड, ये भी रेड फाइबर है तो ये ऑक्सीडेटिव पाथवे से ही होगा. एंड लेटर ऑन जब एटीपी ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे से हमारा एनर्जी रिलीज होगा. ठीक है, व्हाइट टाइप यानी ये फास्ट होगा प्लस ग्लाइकोलाइटिक टाइप होगा. इज दिस क्लियर विद एवरीबॉडी? फर्दर प्रोसीड करें. यहाँ पे क्लियर है एवरीवन? कब स्लो फाइबर कहेंगे, कब फास्ट फाइबर कहेंगे, कब ऑक्सीडेटिव कहेंगे, कब ग्लाइकोलाइटिक कहेंगे? एवरीबॉडी इज दिस क्लियर? चल अब आ जाते हैं बेसिक डिफरेंस देखेंगे. बिल्कुल ध्यान से देखना. दिस इज द चार्ट.
Type 1 is known as slow oxidative. Type 2 is known as fast oxidative glycolytic. Type 2b is known as fast glycolytic. ठीक है, तो कलर की बात, पहले हम साइज की बात कर लेते हैं. तो टाइप 1 इज लार्ज स्मॉल फाइबर एंड टाइप 2 आर लार्जर फाइबर्स. ठीक है, तो अगर फिर कलर की बात कर लेते हैं. टाइप 1 इज रेड, टाइप 2a इज रेड एंड टाइप 2b इज वाइट. रेड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, let me change color. Red is due to presence of myoglobin, and since myoglobin is there, oxygen storage is there, so ATP formation किस प्रोसेस से होगा? एरोबिक प्रोसेस से होगा. ठीक, जबकि क्या होगा? वाइट फाइबर है यानी मायोग्लोबिन एब्सेंट है. मायोग्लोबिन एब्सेंट है यानी ऑक्सीजन स्टोरेज इज एब्सेंट. सो एनर्जी जो रिलीज होगी वो किस पाथवे से होगी? एनारोबिक पाथवे से होगी. एनारोबिक पाथवे में हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विल फॉर्म. विच टाइप ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विल फॉर्म? लैक्टिक एसिड विल बी फॉर्म. ठीक है, एंड लैक्टिक एसिड क्या होगा? accumulate होगा हमारे मसल्स में, and that is going to the cause muscular fatigue. So that's why type 2b is fatigue prone, while type 2a and type 1 is fatigue resistant. ठीक है, क्लियर हुआ एवरीबडी? यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट, टाइप 1 is small fiber, so they are slow fiber. Type 2 are large fiber, so they are fast fiber. Since they are slow fiber, we can say the twitch duration out here will be larger. Since they are fast fiber, we can say twitch duration is small. ठीक है, ट्विच ड्यूरेशन समझ में आया? ट्विच क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में कितना टाइम लगता है, दैट इज नोन एज ट्विच ड्यूरेशन. सो स्लो फाइबर है तो हमारा कंडक्शन स्लो है, तो ट्विच ड्यूरेशन क्या हो जाएगा? लार्जर. Next, coming to the titanizing frequency. What is the formula for titanizing frequency? Anyone? Titanizing frequency is equal to 1 upon contraction period. Since twitch duration larger means contraction duration and relaxation duration both are larger. So contraction period is larger. So titanizing frequency for the type 1 fiber will be, everybody reply fast, titanizing frequency will be lower. जबकि टाइप 2a का क्या होगा? Twitch duration is small है, contraction period is small, so titanizing frequency is. So now coming to the function, type 1 is involved for long and slow contraction. Type 2 is responsible for fine and skilled movement. So this is the most important chart जिसमें आपको सारे questions का आंसर मिल जाएगा. Is this clear with everyone? Do reply fast. Is this clear? चलो फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं. कमिंग टू द मोटर यूनिट एंड इट्स रिक्रूटमेंट. टाइप 1 is slow motor unit, type 2 is fast fatigue resistant, type 2b is fast fatigable motor unit. ठीक है, रिक्रूटमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले जो रिक्रूट होता है दैट इज टाइप 1 फाइबर, देन टाइप 2a फाइबर, देन टाइप 2b फाइबर. दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिक्रूटमेंट ड्यूरिंग आवर वॉकिंग or during our muscular movement. Now coming to the phenomena of tetanus. To understand the phenomena of tetanus, first understand the muscular twitch. When we give a stimulus, there are one contraction and one relaxation. This is a single muscle twitch.
ठीक है, अब हमने क्या किया, स्टिमुलस की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करनी शुरू की. वी आर गिविंग द मल्टीपल स्टिमुलस. तो इनिशियली व्हाट हैपेंड, देयर विल बी सीरीज ऑफ कंट्रैक्शन, देयर विल बी सीरीज ऑफ रिलैक्सेशन. ठीक है, दिस इज नोन एज इनकम्प्लीटेडनेस. Now again we are increasing the stimulus, and when we reaches to the tetanizing frequency, when the stimulus reaches to the tetanizing frequency, there will be sustained contraction and there will be no relaxation, and this is known as completedness. Muscle twitches, single stimulus, single contraction, single relaxation. Incompletedness, multiple stimulus is there, multiple contraction, series of contraction and relaxation is there. Next is completeness, sustained contraction due to continuous stimulation, and there is no relaxation, and this occur only when the stimulus reaches to the titanizing frequency. Now, see, this is the diagram, this is the twitch, that is single contraction, single relaxation with single stimulus. Initially, when we increases the stimulus, initially summation occur. Later on, there will be series of contraction, series of relaxation, that is known as incompleteness. When again we increase the stimulus frequency and it reaches to a titanizing frequency, it causes sustained contraction and no relaxation, and this is known as completeness. This is clear with everybody. Now this, see this one, titanizing frequency is equal to 1 upon contraction period. अभी just discuss किया था. अब बात करेंगे height of contraction of titanized muscle is equal to height of 4 times of height of contraction of single twitch. So suppose this is h, this is h, so this will become 4h. This is 4 times of single muscle twitch. The height of contraction of a titanizing muscle is equal to 4 times contraction of single muscle twitch. Now coming to the question part. अभी तक सेशन में किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन पार्ट स्टार्ट करने वाले हम. किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. In muscle contraction, all are true except A band remain unchanged, H zone disappear, I band become wider, Z line come closer. Everybody answer this question. Everybody answer this question. Yeah, I band shorten up doesn't widen up. Coming to the next question, site where myosin head bind to actin and skeletal muscle are covered by tropomyosin, troponin, calcium, or none of the above. The site where myosin head bind to actin and skeletal muscle are covered by. The site where myosin head bind to actin and a skeletal muscle is covered by.
Yeah, very true. It is covered by tropomyosin. Coming to the next one, tropomyosin help in fusion of actin and myosin, cover myosin and prevent attachment of actin and myosin. Slide over myosin causes calcium release. Everybody answer this question. Tropomyosin help in fusion of actin and myosin, cover myosin and prevent attachment of actin. Slide over myosin causes calcium release. It cover myosin and prevent attachment of actin and myosin. Very true. Coming to the next one, which of the following trigger muscular contraction? Calcium binding to the tropomyosin, calcium binding to the troponin C, ATP breakdown, calcium binding to the troponin I. Everybody answer this question. Yeah, very true. Calcium binding to the troponin C will trigger the muscular contraction. In ATP breakdown will also trigger the muscular contraction. So both B and C is correct. Is this clear, everybody? Coming to the next question, which of a single motor unit is called as myoclonic jerk, fasciculation, tremor, or chorea? Which of a single motor unit is called as? Which of a single motor unit is called as? Twitch of a single motor unit is called as fasciculation. दो टर्म होता है fasciculation and fibrillation. जब हम सिंगल मसल फाइबर की बात करेंगे तो टर्म इज fibrillation एंड सिंगल मोटर यूनिट की बात करेंगे तो दैट इज fasciculation. ठीक है, सिंगल फाइबर के लिए fibrillation, सिंगल मोटर यूनिट के लिए fasciculation is used. Do remember everybody. See, the fibrillation is for muscle fiber, fasciculation is for the motor unit, and this fasciculation will be visible through the skin while this fibrillation cannot be seen through the skin. Chalo. The force of muscular contraction can be increased by all of the following except increasing the frequency of amplitude activation of motor unit, increasing the number of motor unit activated, increasing the amplitude of action potential in the motor unit, recruiting large motor units.
The force of muscular contraction can be increased by all of the following except. The force of muscular contraction can be increased. Yeah, way to answer is C. हम एम्पलीट्यूड ऑफ एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करके हम कंट्रैक्शन नहीं इंक्रीज कर सकते. फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके इनिशियली समेशन होता है. नंबर ऑफ मोटर एम्पलीट्यूड एक्टिवेटेड ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट होगा, ज़्यादा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होगा. लार्ज मोटर यूनिट फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन विल बी मोस्ट. आंसर इज ओनली एंड ओनली सी. Clear everybody? Coming to the next one. Feature of slow twitching muscle is or are. ठीक है, slow twitching muscle contain large amount of myoglobin composed of smaller fiber, contain large amount of glycolytic enzyme, white in color, it has high ADP's activity. So multiple answer है, so everybody answer in the comment. एक एक ऑप्शन देख के फिर आंसर कीजिएगा. Everybody answer this question. Feature of a slow twitching muscle is or are. Contain large amount of myoglobin, very true. Smaller fibril, very true. It has high ATPase activity, very true. Answer is A, B and E. Coming to the next question, which of the following is not a sarcolemma protein? Sarcoglycan, dystrophin, dystroglycan, polygan. Which of the following is not a sarcolemma protein? Polygan is not a sarcolemma protein. Rest are the sarcolemma protein. Answer is D. Coming to the next question. अच्छा question है. There is a mutation of gene encoding for the ryanodine receptor in malignant hypothermia. Which of the following best explain the increase in heat production in malignant hypothermia? Increased muscle metabolism by excess of calcium.
Thermic effect of blood, increased sympathetic discharge, or mitochondria thermogenesis. Chalo, everybody answer this question. The mutation of gene coding for ryanodine receptor in malignant hypothermia. Which of the following statement best explain the increased heat production in malignant hypothermia? Everybody answer this question. No, answer is not B, C. राइनोडिन रिसेप्टर इन मलिग्नेंट हाइपोथर्मिया में क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ राइनोडिन रिसेप्टर का. तो राइनोडिन रिसेप्टर से क्या होता है, कैल्शियम इफ्लक्स होता है. तो मोर कैल्शियम इफ्लक्स विल बी देयर, एंड जितना ज़्यादा कैल्शियम इफ्लक्स होगा उतना ज़्यादा हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा. सो देयर इज इंक्रीज मसल मेटाबॉलिज्म बाय एक्सेस कैल्शियम, एंड दैट इज गोइंग टू जनरेट मोर एंड मोर हीट. जितना ज़्यादा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी, and that is the reason for the heat production in malignant hypothermia. So answer is A. Is this clear, everybody? Is this clear? Coming to the next one. A protein marked at A, this point A, in the Z disk in the following diagram is. So this is Z disk, and this point protein A is titin, nebulin, myosin, alpha-actinin. मैं अभी हेलमेट ले रखा हूँ. अच्छा, अब मार्केट के काम बताओ. विनीता वाली क्या जाना है और मेंटर से बात करनी है. ए पॉइंट, ये हमारा क्या है, जेड लाइन. ये हमारा क्या है, थिन फिलामेंट. ओके, 1 मिनट. दिस इज आवर थिन फिलामेंट, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट, ठीक. और एक्टिन फिलामेंट को जेड लाइन से हमारा जो एंकर्ड करता है प्रोटीन, दैट इज अल्फा एक्टिनिन. सो आंसर इज डी. वेरी गुड. Coming to the next one, graph below is showing the simple muscle twitch of a gastrocnemic muscle. Calculate the titanizing frequency of this muscle. Everybody answer this question. We have to calculate the titanizing frequency of this muscle. How do we generally calculate the titanizing frequency? Anybody? What's the formula is
Formula is tetanizing frequency is equal to 1 upon contraction period. Yeah, way true, Dr. Kanchan, way true, Dr. Farad. Answer is contraction period is 40 millisecond. So answer is 25 watts. And coming to the next question, detachment of myosin from actin is caused by changes in troponin C configuration, attachment of ATP to attachment of ATP to the head, binding of ADP and phosphate to the head, pumping of calcium into the sarcoplasmic reticulum. Detachment of myosin from actin is caused by everybody answer this question. No, that is the second thing that is required for that is calcium back into the sarcoplasmic reticulum. That is required secondly. First thing that is required for the detachment is attachment of ATP to the head. Remember, I had already told you in the session कि ATP अगर bind नहीं करेगा तो myosin head remain stuck to the actin filament and that lead to the rigor mortis after the death. Is this clear, Dr. Kanchan? So answer is not D, it is B. Is this clear, everyone? Do reply fast. No, Dr. Parvez, answer is not D, it is B. Myosin head को अगर detach करना है तो सबसे पहले हमें ATP चाहिए. अगर ATP नहीं मिलेगा तो myosin head detach नहीं होगा. Okay, fine. Coming to the next question. All are related to negative lastiotrofy. इसको हम शाम वाले सेशन में लेते हैं. ठीक है, ये नेगेटिव लैशियोट्रॉफी आपको बेटर इवनिंग वाले सेशन के बाद समझ में आएगा जिसमें हम कार्डियक एंड स्मूथ मसल पढ़ेंगे. ठीक है, इसको स्किप करते हैं अभी के लिए. Next question. All are true about excitation, contraction, coupling, except acetylcholine is released at nerve terminal. Calcium is pumped back into the sarcoplasmic reticulum during relaxation. Calcium is released from sarcoplasmic reticulum during contraction. Calcium binds to troponin myosin to initiate muscular contraction. So everybody answer this question. All of the following are true except everybody do reply first. Yeah, way to it binds to the troponin C, not the tropomyosin. So answer is D.
Coming to the next question, I guess this is the last question of today's session. Common type of calcium channel of skeletal muscle is T type, L type, R type, or N type? No, it is not T type. Do remember, the L type calcium channel is the most common type of calcium channel present in our skeletal muscle. Is this clear with everybody? So that's all, I guess. This is the last question. Yeah, that was the last question of today's session. ठीक है, आज के सेशन में किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं. Anyone, any query? Hope you all like this session. If you like this session, do share ताकि क्लास और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव हो सके. So do share everybody and चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए. Our channel is Let's Crack NEET PG. And press the bell icon so that you will get notification of every classes and you won't miss a single class. ठीक है, रेगुलर मेहनत करते ही यू विल डेफिनेटली एबल टू अचीव योर टारगेट विद गुड रैंक. ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए. यू विल डेफिनेटली एबल टू अचीव योर टारगेट. सो लेट्स क्रैक इट टुगेदर. See you all in the next session. The next session will be at 6 p.m. ठीक है, we will continue this muscular physiology. We will continue the cardiac muscle and the smooth muscle. ठीक है, this is the referral code Dr. Nidhi. If anybody want to join any paid course, you can use this referral code to get additional 10% off. That's all for today. Thank you so much everyone for joining. See you all in the next session. Bye bye everyone.